आज आपके साथ मैं अंडों का बेहतरीन सालन बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसके लिए मेरे पास 4 अंडे हैं, 2 टेबलस्पून दही, 2 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट, 2 टेबलस्पून मेरे पास फ्राइड प्याज, 6 जवे लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी और एक टीस्पून तकरीबन मेरे पास काली मिर्च, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। Today I am going to share with you how to make egg curry. For this I have 4 boiled eggs, 2 tablespoons of yogurt, 2 tablespoons of tomato paste, 2 tablespoons of fried onion, 6 to 7 cloves of garlic, a piece of ginger about 1 inch, 2 green chilies, 1 teaspoon red chili powder, 1 teaspoon salt, half teaspoon turmeric powder, and 1 teaspoon of black pepper, some water and cooking oil. Let's start. First of all, I make some cuts on the eggs like this and put in the bowl. The eggs are well boiled. Only a light cuts are required. Please subscribe my channel, like my videos, share my videos with friends, family members and people around you. If you have any question in mind, please write in the comment box. Now I cut the eggs, or light cut are made on the eggs. Now the eggs are ready. Now I garnish or marinate with small turmeric powder, red chili powder, and salt. I marinate them with these simple spices and let it marinate for 2 to 3 minutes, and I put them aside. I marinate the eggs and put them aside. Now I add all the spices into a mixing jug. Yogurt, tomato paste, green chilies, fried onions, ginger. I cut the ginger into small pieces. Now I add the spices
black pepper, salt, red chilies, turmeric, and I add a little water and crush these things all together. Now I put the oil into the cooking pan. Now I fry the marinated eggs. Now I fry the eggs in the oil. Now I put the eggs. It is very nice, very quick and very tasty recipe. Children like it, elders like it, and when you made, you really enjoy the nice taste of this recipe. Eggs are frying very well. अब मैं मैंने मैरिनेटेड अंडों को जो इसको मैंने मैरिनेट किया था उन अंडों को मैंने फ्राई कर लिया। बड़े ही बेहतरीन फ्राई हो रहे हैं और चूँकि इसको मैरिनेट किया होता तो इसमें जो स्पाइसेस हैं उनकी बड़ी ही बेहतरीन खुशबू जो है वो उठना शुरू हो चुकी है। वाह, बहुत ही बेहतरीन फूड आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स एंड पीपल अराउंड यू। एंड क्वेश्चन मैन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ eggs are marinated well. Now I bring them out. Now I add the ground spices and cook it very well. ये जो मैंने सारा स्पाइसेस जो हैं ग्राइंड किए हैं तो वो स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये सारे स्पाइसेस जो हैं ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसमें मैं थोड़ा सा वाटर भी शामिल करूँगा। बहुत ही बेहतरीन जो है ये, बहुत आसान, बहुत बेहतरीन एग करी कह लें, एग मसाला कह लें, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ एग करी बना रहा हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी जो है जग में डालकर इसमें शामिल कर दिया। वाओ, वेरी नाइस अरोमा इज कमिंग आउट ऑफ इट। इसमें से बहुत ही बेहतरीन अरोमा जो है वो उठना शुरू हो गया। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें और अपना एक्सपीरियंस जो है वो मेरे साथ शेयर करें। और अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में तहरीर करें। वेरी नाइस, वेरी सिंपल and very healthy dish is going to ready. Now I put on the lid for 5 minutes. अब इसके ऊपर मैं 5 मिनट के लिए इसको लिड के साथ लिड इस पे मैंने दे दिया और लिड के अंदर इसको मैं 5 मिनट तक कुक करूँगा। Let it cook for 5 minutes under the steam. Let's check after 5 minutes. Wow, it is cooking very nicely. A very nice gravy is cooking. Wow, बहुत ही बेहतरीन ग्रेवी में से खुशबू आ रही है
और बहुत ही अलग कुक हो रही है। Now is the time to add the eggs into the gravy। अब मैं eggs को ग्रेवी में boiled fried marinated eggs I add into the gravy now। इसको मैंने ग्रेवी में ऐड कर दिया ताकि ये ग्रेवी में से खासा एक्सट्रैक्ट जो है वो इनमें जज़ब हो जाए। Now once again I put on the lid for 5 minutes and I lower the flame. Let it cook for 5 minutes more। ले जी 5 मिनट हो गए इसको स्टीम में पकते हुए। तो let us check। Wow, look at the color, very nicely cooking। बहुत ही अच्छी तरह ये पक रहे हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत आला। अब मैं इसका फ्लेम थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और इसको मैंने थोड़ा सा और भूनना है ताकि ग्रेवी जो है थोड़ी सी थिक हो जाए। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत आला, बहुत बेहतरीन और बहुत क्विकली। बच्चे तो इसे बहुत ही पसंद करते हैं और बड़े भी इसके जो ग्रेवी है उसको बहुत ही पसंद करते हैं क्योंकि इसकी ग्रेवी काफ़ी जो है वो स्पाइसी है। इसका कलर देखें, वाह, इट इज़ वेरी नाइस। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोस, शेयर माई वीडियोस विद फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड पीपल अराउंड यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन माइंड प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के लोग साथ। बहुत ही बेहतरीन अरोमा इसमें से आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन इसकी कुकिंग हो रही है और बस ये मेरे ख्याल में 3 मिनट ज़्यादा दरकार होंगे तो ये रेडी हो जाएगा। मैं ज़्यादा आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि आपने इसको कितनी देर पकाना है। मेरी एक बहुत ही बेहतरीन सब्सक्राइबर हैं, सिस्टर हैं, पाकिस्तानी मोम इन अमेरिका। तो बहुत ही अच्छा व्लॉगिंग का चैनल उनका। तो आप लोग अगर उनका चैनल देखें और अगर आपको पसंद आए तो आप उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरे ख्याल में आपको उनका चैनल बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही बेहतरीन और अपनी डेली रूटीन जो है वो बता रही हैं तकरीबन डेली बेसिस पे। तो आई होप यू मस्ट लाइक दैट चैनल एंड यू हैव टू सब्सक्राइब इफ यू लाइक अ चैनल एंड यू एंजॉय। नाउ दिस इज ऑलमोस्ट रेडी। नाउ आई पुट आउट द स्टोव। Now I put out the stove, it is ready. Very nice aroma is coming out of it and it is very interesting, very easy to make and everyone likes. Children, young ones, old ones, everyone like it because the gravy is very tasty and full of spices and very nice. तो ये बन के तैयार है। मैंने इसका स्टोव ऑफ कर दिया है। तो प्लीज़ आपने एक दफ़ा इसे ज़रूर बनाना है और इन्जॉय करना है और मुझे आपने
फीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैं इसको अब डिश आउट करता हूँ। लीजिए, इसके लिए मैंने एक बड़ी ही बेहतरीन सी डिश चूज़ की है। मैं इसको इस डिश में डिश आउट करूँगा। तो चूँकि खाना बनाने के साथ साथ खाने की बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। कि खाने की बेहतरीन प्रेजेंटेशन खाने के जायके को दोबाला कर देती है। आप इसको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बनाएं, 4 बजे स्लाइसिस के साथ बनाएं, डिनर में बनाएं, और किसी पार्टी में आप इसको साइड डिश के तौर पर भी बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत आला, हर दिल अजीज और हर किसी को पसंद आने वाली ये बेहतरीन डिश है। वेरी नाइस। आप चाहें तो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, बल्कि मैं शामिल कर ही देता हूँ इसमें, वो भी बड़ा खूबसूरत लगेगा। खाने में आपने ऑयल खाना है नहीं खाना आपकी मर्जी है। आप खाने में जब आप खाने लगें तो आप ऑयल इस्तेमाल ना करें, लेकिन इसकी डेकोरेशन के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। प्लीज़ बनाएं और मुझे अपने तजर्बे से आगाह करें कि आपका तजर्बा जो है वो कैसा रहा, और मुझे इसका फीडबैक दें। और आपने ज़रूर इसे ट्राई करना है, और मुझे उम्मीद है कि जब भी आप इसे ट्राई करेंगे आपको बहुत ही ये मज़ा आएगा और आप इसको बार बार बनाएंगे। Thank you for watching. I will be there with you with the next video. Bye bye. Allah Hafiz.